بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيद. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मोहतरम माँ बहनें, मुझे असल में खांसी बहुत ज़्यादा है और मैंने दोस्तों से अर्ज़ किया कि मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी मोहब्बत है, उनका इसरार है कि मैं कुछ बातें अर्ज़ करूं, इसलिए आपके सामने बैठ गया. दुआ फरमाएं खांसी कुछ थम जाए तो इंशाअल्लाह चंद बातें जो मेरे लिए ज़्यादा मुफीद होंगी और इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा. कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ. I am not well today and I have got a lot of cough, but my friends have insisted that I say a few words. So inshallah I will try to say a few words so that we could all benefit from it. आज मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ुक़हा अहनाफ का दूसरे फ़िक़्ह पर कितना एहसान है. I would like to emphasize today that what is the favor which was granted by the Fuqaha Ahnaf on the Fuqaha of other madhahib. Imam Malik rahimahullah was a big Sheikh. Imam Malik बहुत बड़े शेख थे. इमाम दारुल हिजरा उनको कहते हैं और रौब उनका इतना था कि कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था. Imam Malik was such a sheikh, some mashayikh are such that you cannot even lift your eye in front of them. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was such that nusirtu bil ra'bi masirata shahrin. I have been helped by ra'b, by fear. People fear me by the distance of 1 month, meaning people far off from 1 month could not bear the charisma of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Imam Malik was such. Hisham ibn Ammar rahmatullahi alayh एक मर्तबा मगरिब से तशरीफ़ लाए और चूँकि मगरिब यानी वेस्टर्न अरब वर्ल्ड से तशरीफ़ लाए थे, इसलिए वो सवाल किया करते थे. तो इमाम मालिक उसको बर्दाश्त नहीं करते थे कि सवाल हमारे दर्स में सवाल नहीं होता. तो एक मर्तबा किया, 2 मर्तबा किया, तीसरी मर्तबा किया तो किसी को कहा कि इसको 1-2 चपत लगा दो. Hisham ibn Ammar had traveled from the Maghrib, meaning which the west of the Arab world, and he arrived in the place of Imam Malik, and Imam Malik did not like anybody putting any questions to him. So Imam Malik
rahmatullah alayhi, did not like it. When he continued, he told one or two of his students to just give him one or two slaps. And then after that, उसके बाद ये हुआ कि इमाम मालिक ने उनसे यूँ कहा कि लअल्लना आज़न्नाक, शायद हमने आपको तकलीफ़ पहुँचाई. Imam Malik said, perhaps I have given you some pain. So listen to the reply of Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar rahmatullah alayhi has replied. Hisham ibn Ammar ने जवाब दिया कि मेरे वालिद ने हमारा घर बेच कर मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, तो इन छोटी बातों की तरफ मैं क्या इल्तिफात करूँगा. यानी इल्म की इतनी कदर कि घर बेच कर बाप ने बेटे को तालीम के लिए मदीना मुनव्वरा मगरिब से भेजा है, मराकश से. The importance of ilm deen was such in the heart that the father sold his house to send his son to study in front of Imam Malik. Imam Malik इतने खुश हो गए कि यूँ कहा करीब आ जा, करीब कर लिया. Imam Malik was so happy that he told Hisham ibn Ammar, come near. And then Imam Malik used never to read hadith himself. He used to listen from the students. So Imam Malik read himself 17 hadith to Hisham ibn Ammar rahimahullah, when he said that my father sold his house to send me towards you. तो इससे पता चलता है कि इमाम मालिक को इसकी कितनी कदर हुई. मुवाजना कीजिए, जब इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह इमाम मालिक के पास पहुँचते हैं तो इमाम मालिक को कहते हैं कि मुअत्ता मैं सुनाना चाहता हूँ. तो यूँ कहा कि किसी को बुला लो. कहने लगे कि हज़रत अगर मैं पढ़ लूँ और जो है अगर पसंद आए तो ठीक, वरना किसी को बुला लें. To make a comparison, Imam Shafi'i rahimahullah, when he arrived near Imam Malik rahimahullah, then Imam Malik told somebody, could you call someone to read Muwatta? So Imam Shafi'i rahimahullah told Imam Malik, oh ayyuhal Imam, if you listen to me, if you like my recitation, then I will continue, or you could call somebody else. Imam Shafi'i Qurayshiyun Nasal the, he was Qurayshi, and from all the four Imam in adab, in Arabic literature, he has got the highest standing. So Imam Shafi'i, when he started to read Muwatta Imam Malik in front of his Ustad Imam Malik, so everybody was astonished by his recitation. But even then, Imam Malik did not recite one hadith to Imam Shafi'i when Imam Shafi'i came to study in front of Imam Malik. So by this we understand what was the system of teaching of Imam Malik. इससे पता चलता है कि इमाम मालिक के यहाँ जो है किस तरह सबक पढ़ाया जाता था. जब असद इब्न फुरात आए, मगरिब ही से आए थे, तो जो है वो कुछ सवाल करते थे, और इब्नुल कासिम और इब्न वहब वगैरह जो दूसरे शागिर्द इमाम मालिक के थे, वो उनको कहते थे कि तुम सवाल करो. जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सवाल करे, तो दुआ करते थे कि कोई अरबी, कोई देहाती आ जाए तो वो सवाल करे तो जो है हुजूर जवाब दें. तो when Asad ibn Furat arrived from Maghrib, from the western part of the Arab world, and came to Imam Malik rahimahullah, and he started asking questions, and the other students, his colleagues, Ibn Wahb and Ibn Qasim and others, used to push him to ask questions. So he kept asking, until once, twice Imam Malik astonished him, told him off, and admonished him and told him off. And then he said, Imam Malik said, La tas'al ayyuhal maghribi. O Maghribi, you don't ask questions. Imam Malik did not like questions,
So don't ask question. وَإِن كُنْتَ لَابُدَّ فَعِلًا فَاذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ. If you want to ask question, then go to the people of Iraq. So when he was told that, Asad ibn Furat, rahimahullah, went to Iraq, meaning Kufa. And that was the time of Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, rahimahullah. Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad were the teachers there. Especially, he became one of the most renowned students of Imam Muhammad, who both of them are the students of Imam Abu Hanifa. And when he acquired a lot of knowledge and he wrote many books of fiqh Hanafi, of the Hanafi fiqh, when he left Iraq, he came straight to Medina Munawwara. And Imam Malik had already passed away. And he went to the fuqaha Malikiyya, to those who were the students of Imam Malik on the fiqh and who were giving fatwa on the fiqh of Imam Malik. So he went to Ibn Wahb, fatawarra anhu. He went to Ibn Wahb and told him, هذه مسائل كتبتها عن علماء الحنفية. Those are masail which I have written from the ulama Hanafiya. So I want you to write those masail in fiqh Maliki. So fatawarra anhu. Ibn Wahb said, I can't do it. Ibn Wahb ne kaha jab Imam वो masail लेके आए जो इन्होंने इमाम मोहम्मद से हासिल किए थे फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक, और यूँ कहा कि तो फ़िक़्ह मालिकी के मुताबिक इसका जवाब दो, तो वो जवाब इब्न वहब ने कहा मुझसे नहीं होता। फिर दूसरे जो है शागिर्द के पास गए, अशहब के पास, अल-मालिकी के पास। तो अशहब अल-मालिकी कहने लगे हादा कौली हादा कौली हादा कौली। Ashab ibn Malik, when he arrived to Ashab al-Maliki, another student of Imam Malik, so Imam Asad ibn Furat wanted him to say the aqwal, the saying of Imam Malik. And he was saying, this is my call. I didn't hear anything from Imam Malik regarding this. When he kept saying this, then Asad ibn Furat became angry and said to him, I want to hear the call of Imam Malik, not your own saying. And then he became very angry and he said, बहुत जो है नाराज हो गए और यूँ कहा कि दो समंदर जा रहे हैं, बहरान, दो समंदर जा रहे हैं, एक इमाम मालिक का समंदर और एक जो है इमाम अबू हनीफा का समंदर इल्म का, और एक आदमी दरमियान में पेशाब करता है और कहता है कि ये तीसरा मेरा समंदर है जो है, मीनिंग देयर आर टू ओशियन ऑफ नॉलेज गोइंग, वन नॉलेज ऑफ इमाम अबू हनीफा एंड वन नॉलेज ऑफ इमाम मालिक. And you are saying that you passed urine and you say this is the third ocean? How is it possible? So Asad ibn Furat became very angry. So the Fuqaha Malikiya told him, you go to Ibn al-Qasim, who is one of the most renowned students of Imam Malik, who has moved to Misr, to Egypt, and you ask those questions. When Imam Asad ibn Furat went to Misr, असद इब्न फुरात से यूँ कहा गया कि आप मिस्र में जाए और जो है वहाँ इब्नुल कासिम से ये तमाम सवालात करें. तो उन्होंने वहाँ जाके तमाम सवालात इमाम इब्नुल कासिम से पूछे, तो बहुत से उन्होंने जवाब दिए, लेकिन बहुत से अपने क़ियास से बयान किए, अपनी राय से बयान किए. When he went to Ibn al-Qasim answered many questions, but a lot of them from Imam Malik, from the narration of Imam Malik, but a lot of them were his own judgment and his own saying. So when Asad ibn Furat returned to Maghrib and started to teach, he was teaching both fiqh. He was teaching fiqh Hanafi and he was teaching fiqh Maliki. So when he was teaching fiqh Maliki, he himself realized that this kitab has not been fully completed, has not been fully edited. जब पहुँचे जो है असद इब्न फुरात मगरिब में और दोनों फ़िक़्ह की तालीम देने लगे, तो फ़िक़्ह मालिकी का जब उन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया फ़िक़्ह मालिकी को,
तो पता चला कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, यानी उसकी तबयीज़ नहीं हुई है। तो सुहनून अल-मालिकी एक उनके शागिर्द थे, उनको तैयार किया कि तुम दोबारा जाओ, इब्नुल कासिम अभी ज़िंदा हैं मिस्र में, और इस किताब की जो है तुम तबयीज़ करो। सो ही प्रिपेयर्ड हिज ओन स्टूडेंट्स, सुहनून, and Suhnun went to Egypt, and then he managed to persuade Ibn al-Qasim. He was in the later stage of his life to edit that book. So he edited all the masail of the fiqh of Imam Malik and took out all those qiyasat which was not proven by Imam Malik, and that kitab is called Mudawwana, the edited kitab of fiqh Maliki. And the edited kitab of fiqh Maliki, the favor is because Imam Muhammad taught Asad ibn Furat how to regulate, how to write kitab on fiqh. This is why fiqh Maliki was mudawwan, fiqh Maliki was edited by the barakat of Imam Muhammad rahimahullah. This is why this kitab is called sometimes Mudawwana li Imam Malik. Some people called it Mudawwana ibn al-Qasim, but the most renowned name is Mudawwana to Suhnun al-Maliki, because he was the person who edited. So इस किताब का नाम जो है या तो मुदव्वना अल-इमाम मालिक, बाज़ कहते हैं असल मरजा की तरफ, या दरमियान में जो मरजा है इब्न अल-कासिम उसकी तरफ उसकी निस्बत की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है निस्बत उसकी सुहनन अल-मालिकी की तरफ होती है। फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई तो बराज़ई ने जो है उस किताब को और मुरतब किया और उसका नाम तहज़ीबुल मुदव्वना है। Baraz'i, after that another Maliki Aalim came, and then he even edited more the kitab of Suhnun al-Maliki, and Tahzib al-Mudawwana is taught in all the fiqh Maliki, all those madaris we teach fiqh Maliki, which is the whole of the Maghrib and all the countries which are below it, Chad, Dahomey, Ivory Coast, and all those countries. This is something अजीब, जिसकी कदर की जाती है वहाँ इल्म पहुँचता है। इमाम दारिल हिजरा इमाम मालिक हैं, लेकिन उनका पूरा फैज़ मगरिब में पहुँचा है। The whole Arab, Western Arab world is, and the countries below it, Nigeria, Chad, Dahomey, Ivory Coast, and all those are Maliki. But what I want to say is that the favor which Imam Muhammad rahimahullah did on Asad ibn Furat, Asad ibn Furat learned the way to discuss matters from Imam Muhammad, because the style of Imam Abu Hanifa rahimahullah in teaching was that all the ulama used to sit and there will be one masla which will be discussed and everybody will give their opinion, and then at the end, when it was decided by consensus that this is the strongest opinion, then that was written, and that was what Imam Muhammad used to write in his 6th kitab, Al-Jami' al-Kabir, Al-Jami' al-Saghir, Al-Siyar al-Kabir, Al-Siyar al-Saghir, Mabsut and Ziyadat. So in short, I have explained to you the ihsan of fiqh Hanafi on fiqh Maliki. आपके सामने जो है मैंने बहुत मुख्तसर तौर पर फ़िक़्ह मालिकी का जो फ़िक़्ह हनफ़ी का जो एहसान है फ़िक़्ह मालिकी पर, अब फ़िक़्ह शाफ़िई पर इमाम मोहम्मद का एहसान। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह जब पढ़ने के लिए आए इमाम मोहम्मद के पास तो बहुत गरीब थे, तो इमाम मोहम्मद जैसे असद इब्न फ़ुरात की बहुत मदद की, इसी तरह इमाम मोहम्मद ने इमाम शाफ़िई की बहुत मदद की। हर थोड़ी देर के बाद कभी 50 दिनार देते थे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी, कभी 50 दिरहम देते थे। When Imam Shafi'i arrived in front of Imam Muhammad to acquire ilm, so Imam Muhammad used to help him financially as well as his education. So sometimes he used to give 50 dinar, sometimes 50 dirham.
And then while Imam Muhammad was studying with Imam Shafi'i, he said to Imam Shafi'i that Imam Shafi'i told Imam Muhammad, "Ma ra'at ayni ahsana minka fil ilm." My eyes have not seen better than you in ilm. And Imam Shafi'i is the student of whom? Imam Shafi'i is the student of Imam Malik. Imam Shafi'i is the student of Imam Waqi'. Imam Shafi'i is the student of Sufyan ibn Uyayna. So he had so much, so high a standard of ulum from mashayikh who were jibalul ilm, who were mountains of ilm. And he says about Imam Muhammad, my eyes have not seen somebody who is better in ilm than you. Then he asked his ustad, Ayyuhal ustad, can I borrow your kitabs, all your kitabs, and copy it? So at that time there was no printing, and one kitab, Qari Tayyib Sahib, when he came to this country, and some Aalim complained to him कि कोई आलिम किताब ले जाता वो वापस नहीं करता. तो क़ारी तैयब साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो एक आलिम ने शिकायत की कि उलमा किताब ले जाते हैं वापस नहीं करते. तो क़ारी तैयब साहब ने यूँ कहा, देवबंद में यह मसल मशहूर है कि जो है अगर कोई किताब किसी को दे तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन अगर लेने वाला वापस कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ है. Qari Tayyib Sahib told that person who complained that people take my kitab and do not return it. So Qari Tayyib Sahib said that there is a saying in Deoband that anybody who gives to any person a kitab to read, he is a stupid person, but the person who returns it back is even more stupid. Meaning, this is just a saying that when you give the kitab to somebody, they forget about it. And if they have many kitabs, in the kitabs it gets lost, and a lot of time it is not returned for 10, 15 years. So Imam और उस ज़माने में तो सब मखतूतात थे, लेकिन इमाम मालिक ने, इमाम मोहम्मद ने तमाम अपनी किताबें इमाम शाफ़िई को दी. Or Imam Muhammad gave all his kitab to Imam Shafi'i. Imam Shafi'i wrote all those kitab. This is why Imam Shafi'i says, इसीलिए Imam Shafi'i कहते हैं कि ليس لأحد منة علي في العلم وأسباب الدنيا إلا محمد بن الحسن الشيباني. किसी का मुझ पर कोई एहसान नहीं इल्म में और असबाब दुनिया में सिवाय मोहम्मद इब्न अल हसन अल शैबानी के. यानी इतनी कदर करते थे अपने उस्ताद जो इमाम मोहम्मद, जो इमाम अबू हनीफा के अजल तलामेदा में से थे. तो इमाम शाफ़िई ने कितना उनसे फ़ायदा उठाया. और फिर इमाम शाफ़िई ने जो किताबुल उम लिखी है, असल में जो है हम लोग पढ़ते नहीं, किताबुल उम और रिसाला. इमाम शाफ़िई has written two kitabs, al-Umm and al-Risala, which are very high standard in fiqh. शाहवलील्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मेरे अंदर सिफत इज्तिहाद पैदा हुई इमाम शाफ़िई की किताबुल उम की क़िराअत और उसके पढ़ने की वजह से. शाहवलील्लाह मुहद्दिस दहलवी has written that the sifat ijtihad which has come into me, that I could write some masail which you don't find in other kutub of fiqh. So that has come because I've read the Kitabul of Imam Shafi'i. So by this we understand that fiqh Hanafi has got a lot of ihsanat on fiqh Maliki, on fiqh Shafi'i, and by extension of fiqh Hanbali, because Imam Ahmad ibn Hanbal was a student of Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Shafi'i के शागिर्द थे. इमाम शाफ़िई जो है मुंतकिल हो गए थे दिमश्क से जो है मिस्र की तरफ. उनको पता चला कि उनके शागिर्द अहमद इब्न हंबल आ रहे हैं. Imam Shafi'i had moved from Dimashq to Misr, to Egypt. So he heard that if my student Imam Ahmad ibn Hanbal is coming. So he gathered all the rich people and the people of authority
and told them, let's go and meet this big imam. सारे वज़रा और सारे उमरा को जमा किया और यूँ कहा बड़े इमाम आ रहे हैं, उनके इस्तक़बाल के लिए हमें जाना है। तो ये तशरीफ़ ले गए, बाहर तशरीफ़ ले गए और फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल अपने शागिर्द का इस्तक़बाल किया, घर ले आए और घर लाकर जो है उनको खिलाया। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने दस्तूर से ज़्यादा खाया। When he brought him home, Imam Ahmad ibn Hanbal ate more than the norm. And then when he went to go to sleep, जब आराम के लिए तशरीफ़ ले गए तो इमाम शाफ़िई की बच्चियों ने जो है वज़ू का पानी रखा था। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जो है लेट गए और फिर जब फ़जर की नमाज के लिए उठे तो इमाम शाफ़िई के साथ फ़जर के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो बेटियों ने यूँ कहा कि तुमने तो कहा था कि बहुत बड़े इमाम आए हैं, और जो है हमने दो सिफ़ात उनमें ऐसे देखे हैं जो अइम्मा की सिफ़ात नहीं। एक तो खाना बहुत ज़्यादा खाया जो मशाइख नहीं खाया करते, और जो है पूरी रात सोते रहे, वज़ू नहीं किया, सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। तो जब इमाम शाफ़िई ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, इमाम the daughters complained that Imam, you said that he is a big imam, and we have seen by our eyes that he ate more than norm, and mashayikh used to eat very little. And then we have seen, we have put water near him and he didn't touch it, meaning he didn't wake up for tahajjud. And mashayikh, that is not the sifat, that is not the attribute of mashayikh. So Imam Shafi'i went to his student और यूँ कहा कि अहमद तो बदल गया, अहमद तो बदल गया। जो है जी हज़रत, किस वजह से? खाना जो है बहुत ज़्यादा खाया जो मशाइख का तरीक़ा नहीं, और रात को सोया तो तहज्जुद के लिए नहीं उठा। तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने यूँ कहा कि अय्युहल उस्ताद, आप पूछ रहे हैं इसलिए बतला रहा हूँ। जब मैं खाने के लिए बैठा तो इसमें इतनी नूरानियत थी खाने में कि मैं खाता ही रहा ताकि उस नूरानियत को मुकम्मल हासिल करूँ। और फिर मैं जब सोने के लिए गया तो जो है पूरी रात मुझे एक पलक तक नींद नहीं आई, और उस खाने के बरक़ात से हज़ारों मसाइल का मैंने जो है इस्तिखराज किया, और हज़ारों मसाइल मैंने कुरान और हदीस से निकाले, इसलिए मैंने वज़ू सुबह नहीं किया। इमाम शाफ़िई जुम उठे और बच्चियों के पास गए और कहने लगे, कहा नहीं था ना मैंने कि कितने बड़े इमाम हमारे घर आए हैं। So Imam Shafi'i went to Imam Ahmad ibn Hanbal and told him that, oh Ahmad, you have changed. So Ahmad ibn Hanbal said, why are you saying this, ayyuhal ustad, or my teacher? So Imam Shafi'i told him that yesterday you ate more than the norm, and our mashayikh do not eat that much. And then when you retired yourself for sleep, you did not make wudu, meaning you did not pray tahajjud. So Imam Ahmad ibn Hanbal replied that, oh Ustad, I am telling you because you are asking me and you are my teacher, that I ate more than the norm because there was so much barakat in the food you have given me. This is why I ate more than the norm. And then when I went to sleep, I couldn't sleep the whole night because of the barakat of that food. I pondered about masail from Quran or Hadith the whole night, and I deducted many masail regarding Quran or Hadith by the barakat of that food. So Imam Shafi'i was so happy, returned to his daughters and told them, I told you that a big imam has come to our house. These were our mashayikh. But by this you understand that fiqh Hanafi has got so much ihsanat, so much favor on all the fiqh. And when you study fiqh Hanafi, you would understand the barakat of it. इससे पता चलता है कि fiqh Hanafi का जिससे जो मुदव्वन हुआ सबसे पहले, उसका कितना एहसान है दूसरे फ़िक़्ह पर, और दूसरे फ़िक़्ह भी बहुत ऊँचे हैं। इन तमाम जो है फ़ुक़हा का हमें बहुत ही ज़्यादा अदब करना है, बहुत ही ज़्यादा अदब करना। फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा सबसे आगे, अदब में, अदब अरबी में इमाम शाफ़िई सबसे आगे, और जो है अहवाल अहले मदीना में इमाम मालिक सबसे आगे, जो सुन्नत अहले मदीना की, और इमाम अहमद इब्न हम्बल
हदीस में सबसे आगे, हर एक के कमालात हैं। अल्लाह ताला जो है हमें उनके एतराफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम अबू हनीफ़ा इज़ वेरी renowned for his fiqh. Imam Shafi'i for his adab Arabi, for his knowledge of the Arab literature. This is why many ulama have written that if he would not have been an imam, he would have been known as a poet and as an adib, somebody who knows the Arabic literature well. Imam Malik knew all the sunan of Medina, the people of Medina. This is why he is called Imam Darul Hijrah. And Imam Ahmad ibn Hanbal is very, very high in hadith. May Allah Ta'ala give us the tawfiq to understand all the efforts with these mashayikh made. They spent their whole life to study those fiqh, and we discuss it. Oh, we don't believe in any imam. May Allah Ta'ala give us the tawfiq to understand fiqh and hadith and tafsir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.